Hello everybody, hope you guys are doing well. In this video, I'll be solving this question on depreciation, and if you guys already know, there's a video of mine on depreciation, and it's about the basics of depreciation, in which I've discussed the T accounts and the policies of depreciation, and I've also discussed the different methods of depreciation and how we depreciate and the formulas for depreciation and the disposals and how we calculate profit or loss on disposal. Let's have a look at this question. Simon has a business selling office stationery. On 1st January, he had owned 2 delivery vehicles which had been purchased on 1st January 2018. So he already had 2 delivery vehicles which he had purchased on 1st January 2018, which is the previous year. So basically the year under consideration right now is the year 2019. The year under consideration that we are basically जिसके लिए हम अकाउंटिंग करेंगे वो है year 2019, और उससे पहले हमारे पास था 2018, और 2018 में हमने 2 मोटर व्हीकल्स खरीदी थी. सो डिलीवरी व्हीकल्स, बेसिकली डिलीवरी व्हीकल ए विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 30,000. सो व्हेन वी परचेज्ड इट इन 1st January 2018, डिलीवरी व्हीकल ए की कॉस्ट 30,000 थी, डिलीवरी व्हीकल बी की कॉस्ट 25,000 थी. And now they're telling you Simon uses the straight line method for depreciating the delivery vehicles at the rate of 20% per annum on cost is used, with the rate being applied for each part of the year for which the delivery vehicles are owned. This is very, very important here, because इससे आपकी जो basically this is the policy of depreciation. So here you need to take into the account the months of ownership. ठीक है, 2 पॉलिसीज होती हैं, वही दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस की है. एक होती है फुल ईयर्स डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, एंड दिस इज द अदर पॉलिसी इन विच दे एक्सपेक्ट यू टू टेक केयर ऑफ द मंथ्स of the month in which we had purchased the non-current asset, of the month in which we are selling the non-current asset, because that will impact the depreciation. यहाँ पे कह रहे हैं straight line method है, very easy. Straight line method is 20% per annum. You just apply it on cost, and but you have to take care of the months of ownership कि कितने महीने आपने उसको own किया है उस non-current asset को in the year of purchase or whether in the year of sale. How many months have you owned the non-current asset? So now they're saying due to decline in business, delivery vehicle B was sold on 31st March 2020 and a check of 10,350 was received. So basically this is the selling price of the delivery vehicle B. Delivery vehicle A was still in use at the end of 2020. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर 2 years, तो 2019-2020, तो यहाँ पे हमें ये टेक केयर करना पड़ेगा कि हम जो है वो डिलीवरी व्हीकल बी को बेसिकली 2020 में सिर्फ 3 months के लिए यूज़ कर रहे हैं, और डिलीवरी व्हीकल ए को हम पूरे साल के लिए यूज़ कर रहे हैं इन 2020. सो इफ़ वी मेक द डिलीवरी व्हीकल्स अकाउंट, तो इसको, वैसे आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसको हम कॉस्ट अकाउंट कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर सारी वैल्यूज जो होती हैं वो कॉस्ट होती हैं. इफ़ यू हैव अ लुक एट द बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज बेसिकली 25,000 प्लस 30,000, जो कि हमारी 30,000 फॉर डिलीवरी व्हीकल ए एंड 25,000 फॉर डिलीवरी व्हीकल बी, जो कि हमारी कॉस्ट थी जब हमने ओरिजिनली परचेज किया था इन 2018. सो ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है. दिस इज द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. And one important thing to note here is that we are not purchasing any delivery vehicles in year 2019. We are not purchasing any delivery vehicles we are not basically selling any delivery vehicles in 2019. This account basically increases on the debit side and decreases on the credit side. ठीक है, तो अगर आप कोई डिलीवरी व्हीकल खरीद रहे होते तो यू वुड रिकॉर्ड दैट ऑन द डेबिट साइड विद द परचेज प्राइस, बट यू आर नॉट परचेजिंग एनी मोटर व्हीकल, सो you don't have to worry about that. So in 2019, when I actually have to make it for 2019, basically this balance brought down will become my balance carried down, because there has been no change on the delivery vehicles in 2019. तो ना हमने खरीदा है ना हमने बेचा है, so we don't have to worry about any additions or disposals during the year 2019. So I'll write 31st December 2019, and I'll write balance carried down, and that is 55,000. So this account will balance for 2019. Basically this will balance at 55,000, और फिर हम उस बैलेंस को bring down करेंगे. So balance carried down will become balance brought down
and I will write 55,000 here again, and I'll write 1st January 2020. सही है. और now the important thing here is that in 2020 I am basically selling my non-current asset, that is delivery vehicle B. I am selling it on 31st March 2020. and बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर ये है कि बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम डिलीवरी व्हीकल्स जो कि नॉन करंट एसेट है उसका अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डिस्पोजल की जो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं. सो बेसिकली द व्हीकल इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस एंड ये अकाउंट जो है वो डेबिट पे इंक्रीज होता है, क्रेडिट पे डिक्रीज होता है. तो एक व्हीकल अगर आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट व्हेन यू राइट डिस्पोजल ओवर हियर, you basically have to write the cost, the original cost of that non-current asset जो हमने बेचा है. तो डिलीवरी व्हीकल बी जो हमने बेचा है वो हमने ओरिजिनली परचेज किया था 25,000 का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000 एंड हम यहाँ लिखेंगे 31st March 2020 because that is the date of disposal. So then they're telling you then we're not doing any transaction in the delivery vehicle. So there's और कोई बेच नहीं रहे और कोई ख़रीद नहीं रहे. तो हम इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे. तो on 31st December we basically own one motor vehicle, that is delivery vehicle A. So I'll write balance carried down, and that will be 55,000 minus 25,000, that will give me 30,000. And now again this account will balance at 55,000, but my balance brought down will be the same as balance carried down. तो यहाँ पे 1st January आप 2021 लिखेंगे, इसको balance brought down बनाएंगे और 30,000 को basically you will just bring it down. The balance carried down of 2020 becomes your balance brought down of 2021. This means that you in 2021, at the start of 2021, the cost of the non-current asset that you own at the start of 2021 is 30,000. That is delivery vehicle A. ठीक है? That's about it for the delivery vehicles account. It is as simple as that. So you guys should know कि जब delivery vehicles आप खरीदते हैं, you record that on the debit side. Whenever you are selling the delivery vehicle, you record that on the credit side. You write disposal, but the amount that you write should be cost. ठीक है? The original cost of that asset that you are disposing of. तो ये हो गया आपका delivery vehicles का account. In part B of the same question, they are asking you to make a provision for depreciation account, and as you guys already know this, you might know this already, that provision for depreciation is a contra asset account. तो contra का मतलब होता है अंग्रेजी में उसको opposite, the meaning of contra is opposite. So provision for depreciation का account जो है वो credit पे increase होता है और debit पे decrease होता है, and it has a balance brought down on the credit side, just as it, because it's the opposite of an asset. ठीक है? asset and then they are saying कि आपको depreciation provide करनी है 20% per annum on cost. If it's interesting that in 2019, so basically in 2019 I have delivery vehicle A and I have delivery vehicle B. तो delivery vehicle A जो है उस पर मैं basically यहाँ पे करूँगी 30,000 multiplied by 20% because I have to use straight line method, and straight line method में आप cost पे multiply कर देते हैं percentage. तो इसका आंसर आ जाएगा 6,000. ठीक है? फिर व्हीकल बी मैंने पूरे साल यूज़ अप किया है, तो जितना मैंने यूज़ अप किया है उसके हिसाब से मुझे डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी. सो 12 मंथ्स की बेसिकली डेप्रिसिएशन फॉर डिलीवरी व्हीकल ए फॉर 2019 एंड 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन फॉर डिलीवरी व्हीकल बी फॉर 2019. तो यहाँ पे आपने 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20% किया तो आपके पास आंसर आ गया 5,000. सो दोनों की मिला के डेप्रिसिएशन जो है for 2019 depreciation expense will be 11,000. So if you look here, depreciation expense 2018 से जो आ रहा है तो 2018 में भी पूरा साल बिकॉज हमने यूज़ किया है, तो 2018 में दोनों का डिलीवरी व्हीकल ए का 6,000, डिलीवरी व्हीकल बी का 5,000 ऑलरेडी चार्ज हुआ है. सो दिस इज़ द accumulated depreciation at the start of the year, कि शुरू में हमने कितना चार्ज ऑलरेडी कर दिया था. ठीक है? फिर आप 2019 बिकॉज the first year, basically the years that you're doing accounting for is 2019 and 2020. So in this account you write income statement and you write 11,000. तो जब आप इसमें 11,000 लिख देंगे तो अब हमारी accumulated depreciation at the end of the year on 31st December 2019, your balance carried down will become 22,000.
तो इसका मतलब ये है कि हम अपने नॉन करंट एसेट्स पे 22,000 की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं फॉर 2 years, ठीक है, 2 years, दैट इज़ 2018 and 2019. So now for 2020 you will make your balance carried down, your balance brought down. So 1st January 2020 I write balance brought down and I write 22,000. तो हमने इसको basically carried down को brought down बना देना है. And then now I will calculate depreciation for 2020. और यहाँ पे मैं 2020 की calculations लिखती हूँ आप लोगों के लिए. तो delivery vehicle A is being used for the whole year. तो इसके लिए हम करेंगे simply we'll do 30,000. Again the same thing multiplied by 20% will give me 6,000. ठीक है. For delivery vehicle B, I know I am selling it on 31st March. So अगर मेरा साल जनवरी में शुरू हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, मैं 3 महीने इस्तेमाल कर रही हूँ and then I am selling it off. So I have to consider the months of ownership. So because I am using delivery vehicle for 3 months, I need to charge the expense of 3 months because इन्होंने मुझे specify किया है in the question that I have to provide depreciation for each part of the year the non-current asset is being owned. So for the first 3 months of 2020 I am using delivery vehicle B. That is why I am supposed to charge depreciation on delivery vehicle B. So 25,000 multiplied by 20% multiplied by 3 divided by 12 और इसका आंसर आ जाएगा 1250. So basically yearly depreciation will be 5,000 and then I did 3 divided by 12 से उसको multiply किया तो 1250 आ गया. तो यहाँ पे मेरी इनकम स्टेटमेंट की जो वैल्यू है ये 7250 हो जाएगी because I will add 6,000 and 1250. And then we have one thing here is कि हम जो है delivery vehicle को because we are selling it off in 2020, you need to remove the depreciation from your books. Basically accounting information से depreciation को बिल्कुल remove करना पड़ेगा जो हमने non current asset बेच दिया because it's not part of your business anymore. So for delivery vehicle B I have to calculate the accumulated depreciation because I need to remove the accumulated depreciation. So यहाँ पे आप delivery vehicle में side पे थोड़ा सा delivery vehicle B के लिए I'll make the depreciation. So delivery vehicle B was used for 2 years and 3 months. So if you note this and if you read the question properly, in 2018 मैंने उसको depreciate किया था by 5,000. In 2019 मैंने इसको दोबारा depreciate किया था by 5,000. पूरे year की depreciation लगाई थी. In 2020 I depreciated my delivery vehicle B for 3 months. So that depreciation was 1250. So the total depreciation that I charged on delivery vehicle was 11,250. तो मैं यहाँ पे disposal की value लिखूँगी और मैं यहाँ लिख दूँगी 11,250. ठीक है. And I will write the date of disposal 31st March 2020. And then in the balance carried down, इस अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन निकलेगा 31st December 2020 का और आप इसमें करेंगे सिंपली 22,000 प्लस 7,250 which is 29,250 minus 11,250 which gives me okay so 22,000 plus 7,250 minus 11,250 gives me 18,000 और 18,000 जो है वो बेसिकली बची हुई डेप्रिसिएशन है accumulated depreciation on motor vehicle A because accumulated depreciation on delivery vehicle B तो मैंने remove कर दी है. ठीक है. Basically 18,000 is the accumulated depreciation on delivery vehicle A. ठीक है. तो हम जब इस अकाउंट को टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 29,250 and both sides will equal to 29,250 and then I will bring down the balance. So I write first January 2021 I'll write balance brought down and I will write 18,000. ये हमारी depreciation basically balance brought down हो जाएगा. This is how the account looks like. And then we'll make the delivery vehicles disposal account which is the easiest क्योंकि आपने सारा काम कर दिया है. तो if you notice in your non-current asset account disposal is coming on the credit side, so disposal account is being debited against it. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी delivery vehicles
So delivery vehicles is being credited, so this account will be debited. और यहाँ मैं लिख दूँगी 25,000 क्योंकि वो 25,000 वहाँ लिखा है on the credit side in the delivery vehicles account. And then date will be 31st March. 31st March. And for the provision for depreciation account, I wrote disposal on the debit side, that is 11,250. That was the accumulated depreciation on the asset that we disposed of. So I'll write provision for depreciation and I write 11,250. Now if you notice, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, the net book value of our non-current asset on the date of disposal is basically 25,000 minus 11,250, the answer to which is 13,750. ठीक है, and then 13,750 is our net book value. But if you notice here, if you notice here, the selling price of that non-current asset was 10,350. तो इसका मतलब हमने एस्टिमेट किया था कि हमें non-current asset के 13,750 मिलने चाहिए थे, but हमें 10,350 मिले. And if you notice, delivery vehicles 25,000 डेबिट साइड पे लिख दिया आपने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 11,250. द थर्ड थिंग हियर दैट विल बी रिकॉर्डेड, बैंक विल बी डेबिटेड, सो डिस्पोजल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, सो आई राइट बैंक हियर एंड आई राइट 10,350. तो अब जो है वो हमारा डेबिट हैवी है, क्रेडिट लाइट है. तो अब हमारे पास इस दोनों का डिफरेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एंड ये जो है ये हमारा लॉस है, बिकॉज अगेंस्ट दिस इनकम स्टेटमेंट इज बीइंग डेबिटेड. व्हेन इनकम स्टेटमेंट इज बीइंग डेबिटेड, प्रॉफिट कम हो जाता है. तो यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,400. सो नाउ दिस अकाउंट विल बैलेंस एट 25,000. And we have a loss on disposal which will be taken as an expense in the income statement, which is not the requirement over here, but you guys should know कि ये चीज़ जो है वो as an expense जा रही है in the income statement. In the last part of the same question, they are saying Simon's sister Yasmin is also in the same business and depreciates her delivery vehicles by reducing balance method. तो हम कौन सा यूज़ कर रहे थे? Simon is using the straight line method, Yasmin is using the reducing balance method. They are saying Simon is considering whether to apply the reducing balance method of depreciation to his delivery vehicles. So they are saying, so what you have to do is that advice जब करना होता है तो आप कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के दो एडवांटेजेस दे दें, रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड के एडवांटेजेस और सुटेबिलिटी दे दें, and then give your justification. So here they're saying कि okay, if they are using the straight line method already, so that means they don't have to make a lot of effort to calculate depreciation. Under the straight line method, depreciation is very easy to calculate. You just have to apply the percentage on cost, and depreciation एक ही दफ़ा calculate करनी पड़ती है because every year depreciation stays the same. ठीक है, for the straight line method, every year the depreciation expense is the same. But for reducing balance method, you have to calculate depreciation every year because you have to apply the percentage on the net book value, not on the cost. तो depreciation change होती रहेगी और वो depreciation जो है वो it will keep reducing. ठीक है, for the reducing balance method, it is suitable for those assets which lose greater value in the earlier years and less value in the greater value in the earlier years, क्योंकि because a greater depreciation is being provided in the earlier years, and in the later years depreciation कम हो जाती है but another expense is added, that is repairs. ठीक है, तो ऐसे वाले assets के ऊपर यूज़ होती है. Usually delivery vehicles realistically will show a very nice realistic value if we use the RBM method, because RBM actually में delivery vehicles पे यही होता है कि शुरू में you don't have to pay for a lot of repairs, लेकिन जैसे vehicle old होता जाता है आपको उसके repairs के जो expense होता है वो बढ़ जाता है. Straight line method में इतना realistic नहीं आएगा उसका नेट बुक वैल्यू, बेसिकली इतनी अच्छी रियलिस्टिक उस पर नहीं शो होगी. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे रियलिस्टिक होगी. लेकिन व्हाट यू हैव टू एडवाइज हियर, तो हमने इधर अपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किन सिचुएशंस में सूटेबल है, स्ट्रेट लाइन मेथड किन सिचुएशंस में सूटेबल है. एंड में हम अपनी जब एडवाइस देंगे तो हम ये कहेंगे कि दे शुड नॉट चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन विच दे से दैट whenever you're using a method or a policy, you don't change it unnecessarily. You don't change it without any reason, without any solid reason, because that actually makes the profit different for every year, and comparability between the income statement of every year becomes it's not true and fair.
कि आपकी जो है वो कंपेरेबिलिटी अच्छी नहीं रहती। आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी मेथड अलग था तो उसकी वजह से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग आया था। इस बार मेरा मेथड डिफरेंट है और उसकी वजह से डिप्रिसिएशन ज़ाहिर है अलग आएगी, तो मेरा प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे। जब प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे तो आई कांट कंपेयर द प्रॉफिट्स एनी मोर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। You don't go against, basically you don't go against the accounting concepts that are being applied.